Good morning, children. Today we are going to discuss about action of enzymes. In the previous lecture, we have already discussed about enzymes as such. Now we'll be specially dealing with the action part of the enzyme. So let us start with the topic. Now, as you can see on the screen, action of enzymes. Enzymes are actually made up of protein, and this we have already discussed in our previous lecture. Now, since enzymes are protein, it has also got a three-dimensional structure, including an active site. And I have told you on that day in our previous lecture that it is in the active site that the substrate gets fit. Now, symbolically, substrate and the product can be represented as S and P, as you can see on the diagram. Now substrate S has to bind to the enzyme to its active site within a given cleft or a pocket. The substrate has to diffuse towards the active site. Now after the enzyme gets in contact with the substrate, there is a formation of a complex called as EC complex. ES complex. ये देखिए यहाँ दिया हुआ है ES complex. Now that फॉर्मेशन टेक्स प्लेस जब इंजाइम और सबस्ट्रेट एक साथ मिल जाए एक्टिव साइट पे तो वो बनता है एंड दैट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा होता है। जब कोई एंजाइम के साथ बाउंड रहता है कोई सबस्ट्रेट तो कुछ समय के बाद उसमें एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यानी कि देयर माइट बी अ न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो वो फेनोमेना शुरू होता है। जब ये फेनोमेना शुरू होता है तो और इसका एंड हो जाता है तो एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ईपी कॉम्प्लेक्स, और वो भी कुछ समय के लिए बनता है। देन afterwards this enzyme and product, they are released outside as such, and the enzyme, the structure of enzyme is not changed in this phenomena as such, and you can see this. Okay, now let us discuss about the transition state. So this is the amount of energy which is required in order to convert the substrate into product. You can see this graph as such. ये यहाँ पे जा रहा है, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का। Now for substrate getting converted into product, it is very essential that it has to pass through a transition state, and in order to reach the transition state an amount of energy is required which is called as activation energy. उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो without a catalyst or an enzyme, the amount of energy required is very high, as you can see this. ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर, ये विदाउट एंजाइम। एंजाइम अगर यूज्ड हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कम हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए केवल इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट इज द रीजन वाई एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस आर which occurs at a very high rate as compared to those reactions which do not occur which occurs without enzyme as such. तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, यहाँ वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ओके, एंड दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना यहाँ देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस बताया गया है। फिर से वही एक्स एक्सिस में रिएक्शन प्रोग्रेस है, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है। आप देखिए जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है आप देख रहे हैं, जहाँ रिएक्टेंट है उससे नीचे की तरफ है, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई है, रिलीज हुई। यही वजह है प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट इन दिस केस। नो वहाँ पे जहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है वहाँ ये देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, वो ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज नहीं हुई है। ऐसे रिएक्शन में जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम है रिएक्टेंट से, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, नाउ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट गेट्स फिट इनटू द एक्टिव साइट्स present in the enzyme, forming ES complex. Further, there is breaking of bond or formation of new bond and resulting into another complex which is called as EP complex, formation of EP complex. And then there is dissolution of both enzyme and product forming E plus P. आप देख रहे हो E plus P का formation हुआ, product enzyme से हट गया है. Now let us start with we'll discussing about the homework part. What is activation energy? So I have already told you amount of energy required for a reactant to get converted into product passing through a transition state. When amount of energy which is required is called as activation energy. Activation energy with enzyme is lower than that of activation energy without enzyme. Give reasons. The reasons are that when enzyme is involved in the step, then the route becomes different. That the level of energy which is required in order to convert the substrate into product is very less. In that case, the route changes. So the amount of energy also decreases. Write the steps of enzyme action starting from reactant and getting converted into product. तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट सबसे पहले इंटरैक्ट करते हैं, फिर सबस्ट्रेट इट डिफ्यूजेस इनटू द site where the active site of the enzyme is present. Then substrate gets fit with the enzyme. There is certain change in the structure of the enzyme also. In that case, completely lock and key hypothesis नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं. Is it clear? And then there is breaking or formation of new bond, resulting into the formation of enzyme and product complex, that is called as EP complex. And then afterwards the substrate which has now got converted into product, it is diffuses out from the active site as such, and both enzyme as well as the product, now they are released outside, and enzyme is now prepared to act on another substrate so that it may get converted into product afterwards. So that is all about this topic. Thank you very much.